Assalamu alaikum and welcome to Dr. Iman's official. And in today's lecture, we will discuss the face muscles and their functions. As you know, the face muscles are very important and they play a very important role in our routine life and they help in facial expressions like smiling, horror, and sadness, and every kind of expression in our routine life. So, in today's lecture, we will discuss the face muscles, their locations, and their functions. So, if we discuss the first muscle is called procerus muscle. Procerus muscle is located just at your forehead location, and the procerus muscle help to pull your brows downward, your eyebrows downward, and the second important function is that it flares your nostrils. The second muscle is called orbicularis oculi. Orbicularis oculi is located to the lateral position of the eye, and the main function of orbicularis oculi is to close your eyelids. Now we come on to the third muscle. The third muscle is called nasillus muscle. Nasillus muscle is located on your nose. It is a ring-like muscle, and the main function of nasillus is to compress your nasal cartilage and it elevate your nostrils. The next muscle is called pterygoid muscle. So there are two muscles of pterygoids. First is lateral pterygoid muscle and the second is medial pterygoid muscle. So the lateral pterygoid muscle is located on the lateral position of the mouth, and the medial pterygoid muscle is located on the medial side of the mouth. So the lateral and medial pterygoid muscles are helpful in the movement of mandible. Then another muscle that is called orbicularis oris. Orbicularis oris is located just beneath your nose and at the upper side of your upper lip. The main function of orbicularis oris is to close your lips. So when you close your lips, so this is because of orbicularis oris. So if you look at this position, here is the neck position, and at this position there is a strong muscle that is called platysma. Platysma is a very important muscle, and platysma is helpful in different kind of facial expressions like smile, horror, surprise, sadness, and if you look at the sky, uh, like the position in sadness. So all these positions, the basically the platysma muscle play an important role. Now if you look, come onto the another side, on the front side of your skull, that is called frontalis. This muscle is basically a fan shaped muscle, and this muscles help you to your wrinkles on your forehead. After frontalis, this muscle is on the temporalis region, and this muscle is called temporalis muscle. And temporalis muscle is a very important. It plays two important roles. The first role of temporalis is to elevate your mandible, and the second important function of temporalis is grinding movement of mandible of teeth. After this muscle, then comes there another muscle at below at your eye, and this muscle is called levator labii superioris muscle. Levator labii superior muscles has two most important functions. The first function of labii superioris is to open your nostrils. When you open your nostrils, that is because of the help of levator labii superioris.
And the second important function of levator labii superioris is to lift your upper lip. After this muscles, there is another muscle on the cheek side, on the superior side of the cheek, that is called zygomaticus muscle. Zygomaticus muscle play an important role in facial expressions. Another important function of zygomaticus. So there here are two muscles. One is zygomatic major and the another is zygomaticus minor. So zygomaticus major and zygomaticus minor, both muscles help in facial expressions and draw your mouth anteriorly and laterally. After this muscle, there is another muscle located on the lateral side of the cheeks. This muscle is called masseter muscle. The masseter muscles play important role in your opening and closing of your jaw, opening and closing of your mandible. Then comes here. Uh, this is also located on the lateral side of the cheek, and this muscle is called buccinator muscle. And buccinator muscles especially help your jaw to open and close. Sorry, buccinator muscle basically is located on your cheek side, and its basic function is to hold your cheeks towards your teeth. So the buccinator muscle has important function because it holds your cheeks towards your teeth. Then comes there another muscle that is called risorius muscle. Risorius muscle is located just on the lateral side of the lips, nearby lips, and the main function of risorius muscle that it helps in smile. Then comes another muscle. That muscle is called depressor anguli oris. Depressor anguli oris is an important function, is located onto the lateral side of the mouth. The main function of this muscle is to draw your mouth laterally, draw your mouth, angle mouth laterally towards outside. Then there comes another muscle, last one. This muscle is called depressor labii inferioris. The function of depressor labii inferioris is to pull your lips downwards, and it also helps your lips to slide. So these are the important muscles, and we have discussed the function of each muscle. If we go through, once again, go through a little bit uh, extra things here. For example, we will repeat this again. For example, if we look at the first muscle, that muscle is called procerus muscles. Procerus muscle helps your brows to lift your brows downward, and it flares your nostrils. The second muscle is called orbicularis oris. Orbicularis oris is located on the lateral side of your eye, and it helps in to close your eyelids. Then the next muscle is called nasalis muscle. Nasalis muscle is located on your nose. It's a ring-like muscle, and it helps to, to compress your nasal cartilage. And another function is to elevate your nostrils. Then comes pterygoid muscles. So there are two muscles of pterygoid. One is called lateral pterygoid, and the second one is called medial pterygoid muscle. So the lateral and medial pterygoid muscles, both of these muscles help to move the mandible at temporomandibular joint. Then comes another muscle that is called orbicularis oris. Orbicularis oris is located just on the upper side of your upper lip, and it helps to close your upper lip. Then the last muscle on this side is called platysma. Platysma is a very important muscle, and platysma helps your facial expressions like sadness, horror, and surprise.
When you look at the sky in the position of sadness, so this muscles involves very important functions. Now we comes on to this side of the face. At the front part of the frontalis area of the skull, the front muscle is called frontalis. It's a fan-shaped muscle, and it helps in wrinkles on your forehead. Then comes temporalis muscle. Temporalis muscle is located on the temporal region, and the two important functions of temporalis muscles are, one of them is it elevates your mandible, and the second function is it helps in grinding movement of the teeth. After this comes levator levi superioris muscle. Levator levi superioris muscle is located just at the beneath of your eye, and the main function of this muscle is to uh, main function of this muscle is to open your nostrils, and the second function to lift your upper lip. After this comes we comes towards the side of cheek, and the cheeks contain very important muscles, four to five kind of different muscles which are located to each other, close to each other. One of these muscles is called zygomaticus muscle. Zygomaticus is also divided into two major muscles, that is zygomaticus major muscle and zygomaticus minor muscle. Zygomaticus major and zygomaticus minor muscles help in facial expressions, and it draw your mouth laterally as well as anteriorly. Then comes masseter muscle. Masseter muscles are located on the lateral side of your cheeks, and lateral masseter muscles basically open helps to close and open your jaw. Here is another muscle that is called buccinator muscle. Buccinator muscles play an important role to hold the cheek towards the teeth. Then comes a risorius muscle just on the lateral side of the lips, and risorius muscles help in smiling. Then last two muscles are also very important. The last two muscles, first one is called depressor anguli oris. Depressor anguli oris is a very important muscle that is located just beneath the side of the lips, and these muscles help to draw your mouth laterally. And then the last muscle is called depressor labii inferioris. Depressor infi, depressor labii inferioris muscle helps your lips to pull. Basically, it pulls your lips downwards and also slide your lips. So here is another muscle on the mentalis region. On the mentalis region, this muscle is called mentalis muscle, and just located at your chin. And this muscle basically control your movement of your lower lips. So these are the main muscles which we have discussed right now. Now I will describe this in Urdu language. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं ये हम फेस मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और एज यू नो फेस मसल्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, और फेस मसल्स को अगर देखा जाए तो हमारे रूटीन के जो वर्क हैं, डेली फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक हैरानगी का इजहार करना, स्माइल देना, और एस्टोनिशमेंट, इसका इसी तरह सैडनेस का, तो ये जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं फेस के, वो इन्हीं मसल्स की वजह से आते हैं। अब इनकी हम बेसिकली जो लोकेशन है इन मसल्स की वो डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस टू द टॉपिक। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो मसल आता है प्रोसरस मसल आता है। प्रोसरस मसल बेसिकली जो है आपकी जो फोरहेड है, बेसिकली आईज की, दोनों आईज के मिडल में जो बेसिकली नोज का एरिया, अपर जो सुपीरियर पार्ट होता है बेसिकली नोज का, वहां पे लोकेट होता है। और जो प्रोसरस मसल्स है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
पहला प्रोसेस का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, पुल्स ब्रोज डाउनवर्ड, यानी कि जो आपकी आईज ब्रोज है उनको ये हेल्प करता है नीचे की तरफ मूव करने में। और सेकंड इंपॉर्टेंट मसल्स का फंक्शन प्रोसेस क्या है, इट फ्लेयर्स योर नॉस्ट्रल्स, यानी कि ये नॉस्ट्रल्स को खुला करता है, फ्लेयर्स करता है, यानी कि जब आप गुस्से में आते हैं या इस किस्म की करें तो ऐसे यू नॉस्ट्रल्स को फ्लेयर करते हैं, तो ये बेसिकली प्रोसेस की वजह से होता है। सेकंड जो मसल आप देख रहे हैं जहां पर पाया जा रहा है, ये जो मसल है ये बेसिकली इसको हम ऑर्बिकुलरिस ऑरस मसल कहते हैं। और ऑर्बिकुलरिस ऑरस मसल को आप देखें तो आई की बिल्कुल लेटरल साइड पे पाया जा रहा है। और ऑर्बिकुलरिस ऑरस ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो है बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, क्लोजेस योर आईलिड्स, यानी कि आईलिड्स को अगर आप क्लोज करेंगे तो उसका मेन जो रोल होगा वो किसका होगा, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का होगा। उसके बाद हमारे पास जो मसल आता है बिल्कुल नोज के ऊपर होता है और रिंग लाइक मसल होता है, इसको हम नाजिलस मसल कहते हैं। और जो नाजिलस मसल होता है इसके भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये बेसिकली जो कार्टिलेज बोन है नोज की उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ये नॉस्ट्रल्स को एलिवेट करता है, एक खास पोजीशन देता है नॉस्ट्रल्स को। उसके बाद हमारे पास जो अगला मसल आ रहा है उसको ट्रीगॉइड मसल कहते हैं। और ट्रीगॉइड मसल्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक लेटरल ट्रीगॉइड मसल होता है और जो सेकंड वन होता है उसको मीडियल ट्रीगॉइड मसल कहते हैं। अब जो लेटरल ट्रीगॉइड मसल होता है वो कहाँ पे, लेटरल से मींस कि ये लेटरल पोजीशन पे माउथ की लेटरली बेसिकली जो एंड ऑफ द माउथ है इस तरफ लेटरल साइड में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम लेटरल ट्रीगॉइड मसल कहेंगे। और जो मीडियल साइड की तरफ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल ट्रीगॉइड मसल कहेंगे। अब ये लेटरल और मीडियल ट्रीगॉइड जो मसल है इनका जो बेसिक फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मैंडिबल, यानी कि जो हमारे जबड़े की मूवमेंट होती है उसको अगर देखा जाए तो ये ट्रीगॉइड मसल्स इसमें हेल्प आउट करते हैं। और ये मूवमेंट किस साइड पे होती है, ये जो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट होता है, यानी कि इधर से टेम्पोरल रीजन और इधर से मैंडिबुलर रीजन जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है उस एरिया में जो मूवमेंट होती है वो ट्रीगॉइड मसल्स कहते हैं। अब अगले मसल पे आ जाए तो अगला मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किस्म का मसल है, दैट इज कॉल्ड प्लैटिज्मा। अब प्लैटिज्मा जो है बेसिकली आपकी नेक की जो बेसिकली निचली साइड होती है यहाँ पे दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। और प्लेटिज्मा मसल का अगर देखा जाए तो बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये भी एक्सप्रेशंस को बेसिकली शो करता है। लेकिन मेन इसके अगर देखा जाए आप उसमें देखिए एक्सप्रेशंस में तो सैडनेस, सरप्राइज और हॉरर तीन किस्म के एक्सप्रेशंस ये जाहिर करता है। सबसे पहले तो उदासी, फॉर एग्जांपल अगर अजीब सा बंदा उदास है और ऐसे दुख की सूरत में उदासी की सूरत में आसमान की तरफ देखता है तो अपवर्ड मूवमेंट होती है आपकी, माउथ ऊपर की तरफ जाता है आसमान की तरफ, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है प्लेटिज्मा की वजह से होती है। इसके अलावा प्लेटिज्मा का सरप्राइज, हैरानगी का इजहार करना, या हॉरर ऐसे खौफ वाली खौफनाक किस्म की शक्ल बनाना, तो ये जो बेसिकली फंक्शंस हैं वो सारे प्लाटिज्मा के पास आते हैं। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे अगर फ्रंट पे आप देखें तो बिल्कुल जो पेशानी की हमारी टॉप हेड होता है, यानी कि ये जो एरिया होता है इसको हम फ्रंटालिस कहते हैं। और ये जो मसल होता है इसको फ्रंटालिस मसल कहते हैं। और आपकी जो बेसिकली पेशानी की अगर जो जो बल से आते हैं बेसिकली जिनको हम रिंकल्स कहते हैं, तो रिंकल ऑफ फोरहेड जो है ये किसकी वजह से बनते हैं, ये फ्रंटालिस मसल की वजह से आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इधर देखें तो ये जो रीजन हमारा होता है बेसिकली यहाँ पे इसको हम टेम्पोरलिस टेम्पोरल रीजन कहते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो मसल होता है उसको टेम्पोरलिस मसल कहेंगे। और जो टेम्पोरलिस मसल है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला टेम्पोरलिस मसल का जो फंक्शन है वो क्या है, इट एलिवेट्स मैंडिबल, यानी कि जो आपका जो जबड़ा है जो मैंडिबल है उसको क्या करेगा, एलिवेट करने में हेल्प आउट करेगा। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ग्राइंडिंग मूवमेंट ऑफ द टीथ, यानी कि जो हम दांत पीसते हैं तो ये जो अगर होता है तो ये भी बेसिकली इस फ्रंटालिस मसल इसमें इन्वॉल्व होता है। और फ्रंटालिस मसल यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंटालिस ये पार्ट है लेकिन बेसिकली नीचे तक आता है, यानी कि आपके ईयर तक अगर देखा जाए तो ये मसल आता है।
यानी कि जो मैंडिबल का ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे एंड पे यहाँ तक ये मसल आता है, दैट्स वाई इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये मैंडिबल में हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगर देखें तो बिल्कुल आईज के बिल्कुल नीचे साइड पे ये जो मसल लोकेट होता है, इस मसल को हम लेवेटर लेबाय सुपीरियर रेरस मसल कहेंगे। लेवेटर लेबाय सुपीरियर रेरस मसल जो है, बेसिकली इसके भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन इसका है, बेसिकली ये नॉस्ट्रल्स को ओपन करता है, यानी कि आपके जो नाक के नत्थे हैं उनको नॉस्ट्रल्स को ओपन करने में हेल्प आउट करता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लिफ्ट योर अपर लिप। ये क्या करेगा, आपका जो अपर लिप है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद हमारे पास चीक्स के ये जो साइड आपकी आ जाती है ना, यहाँ से लेकर ये तक, ये इंपॉर्टेंट साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है चीक्स की। यहाँ पे 4 से 5 इंपॉर्टेंट मसल आ जाते हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइगोमेटिकस मसल को। अब जाइगोमेटिकस मसल जो है, यहाँ पर बेसिकली चीक्स के मिडल में लोकेट होता है, और ये अगर ऊपर की साइड पे होगा तो जाइगोमेटिकस मेजर कहलाएगा, और ये निचली साइड पे होगा तो जाइगोमेटिकस माइनर कहलाएगा। अब जाइगोमेटिकस मेजर और जाइगोमेटिकस माइनर, बोथ जो मसल्स हैं इनके भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन फेशियल एक्सप्रेशंस है, यानी कि फेस के जो एक्सप्रेशंस देना, वो भी जाइगोमेटिकस मेजर और जाइगोमेटिक माइनर जो है, इन दोनों का फंक्शन में आता है। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर का है, वो है ड्रा एंगल ऑफ माउथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि जो माउथ का जो एंगल है ऊपर की तरफ उसको लेके जाना और नीचे की तरफ लेके आना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जाइगोमेटिकस मसल का। जाइगोमेटिकस मसल के बाद हमारे पास जो साइड पे जो मसल होता है, इसको मेसेटर मसल कहते हैं। और मेसेटर मसल जो है, इसका बेसिक जो फंक्शन है, ये बेसिकली जो जा है, जबड़ा है, उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली मेस्टिकेशन में भी हेल्प आउट करता है, चुबाने में भी हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिप्स की बिल्कुल साइड पे आगे जो मसल्स हमारे पास आता है, इसको बक्सीनेटर मसल कहेंगे। और जो बक्सीनेटर मसल है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बक्सीनेटर मसल बेसिकली आपकी यहाँ पे लोकेटेड होता है, और बक्सीनेटर मसल का जो बेसिक फंक्शन है, वो आपकी चीक्स को टाइट करके होल्ड करता है आपके दांतों के साथ। यानी कि बेसिकली जो पोजीशन आपकी चीक्स की होती है, वो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल स्टेबल हुई है। तो स्टेबिलिटी जो है चीक्स की, ये बेसिकली मेस्टर मसल की वजह से आती है, सॉरी बक्सिनेटर मसल की वजह से आती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेटरल साइड, यानी कि जो बिल्कुल बैरूनी साइड होती है होंठ की, यहाँ पे हमारे पास राइजोरियस मसल होता है। और राइजोरियस मसल क्या करता है, राइजोरियस मसल बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है स्माइलिंग में। तो स्माइल जो करते हैं वो राइजोरियस मसल की वजह से करते हैं। राइजोरियस मसल के बाद फिर हमारे पास दो मसल यहाँ पे और आ जाते हैं। ये जो मसल आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली डिप्रेसर एंग्लॉय, डिप्रेसर एंग्लॉय ऑरिस मसल कहलाता है। और ये जो डिप्रेसर एंग्लॉय ऑरिस मसल है, इसका बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये माउथ को आप लेटरली ड्रॉ करते हैं, यानी कि ऐसे अगर होंठों को आप लेटरली की इस तरफ फेस को ड्रॉ करेंगे, तो ये बेसिकली इसकी मूवमेंट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मसल हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर लेबाई इंफीरियर रेरस। अब ये चूंकि इंफीरियर पोजीशन पे है, वो सुपीरियर पे था, दैट्स पर सुपीरियर रेरस लगा था। ये इंफीरियर पोजीशन पे, दैट इज इट्स कॉल्ड इंफीरियर रेरस पोजीशन। तो ये जो मसल है, ये बेसिकली आपका जो लिप है, यानी कि जो होंठ है, उसको डाउनवर्ड और उसको स्लाइड करने में हेल्प आउट करता है। और फिर जो आखिरी मसल हमारे पास आता है, बिल्कुल आपकी जो चिन होती है, जो थोड़ी होती है, इसके दरमियान में पाया जाता है, इसको मेंटालिस मसल कहते हैं। और जो मेंटालिस मसल है, बेसिकली आपकी जो लोअर लिप की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली आज के मसल्स थे। अगर इसको हम एक दफ़ा फिर शॉर्ट में रिवाइज करें, तो उसमें ये होगा, सबसे पहले हमारे पास प्रोजरस मसल आता है। प्रोजरस मसल क्या करता है, हमारे जो भवें हैं, बेसिकली आईब्रोज हैं, उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, सिंपल इन सिंपल। और जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको फ्लेयर करता है। सेकंड हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई आ जाता है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो है, ये क्या करेगा, आईलिड्स को क्लोज करने में हेल्प आउट करेगा। फिर उसके बाद नेजलस मसल आ जाता है। नाजिलस मसल क्या करेंगे, ये जो हमारे नाक की जो कार्टिलेज है उसको सप्रेस करेंगे और
नोज को ओपन करने में, नॉस्ट्रल्स को हेल्प आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिगॉइड मसल्स आ जाते हैं। ट्रिगॉइड्स जो है बेसिकली क्या करेंगे, हमारी मैंडिबल की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प आउट करते हैं। ट्रिगॉइड मसल्स के बाद फिर हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरस आ जाता है। और जो ऑर्बिकुलरिस ऑरस है ये बेसिकली जो हमारे लिप्स को जो क्लोज करने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद प्लेटिज्मा आ जाता है। प्लेटिज्मा आपका हमने देखा कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक सैडनेस, हॉरर, और इसके अलावा एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्लेटिज्मा में आ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप फ्रंटालिस की तरफ आ जाए, फ्रंटालिस जो बेसिकली रिंकल्स हैं, जो बल बेसिकली आते हैं पेशानी के ऊपर, जो रिंकल्स आते हैं, ये बेसिकली जो है ना ये फ्रंटालिस मसल की वजह से आते हैं। फ्रंटालिस के बाद हमारे पास टेम्पोरालिस मसल आ जाता है। टेम्पोरालिस यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे मैंडिबल तक आएगा। और टेम्पोरालिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये मैंडिबल को क्या करेगा, एलिवेट करेगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या है कि ये ग्राइंड करेगा, टीथ को जो ग्राइंड करते हैं ना वो बेसिकली इस मसल्स की वजह से होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आईज के नीचे जो मसल आता है इसको हम लेवेटर लेबाई सुपीरियर एरस कहते हैं, क्योंकि ये सुपीरियर साइड पे मौजूद होता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि एक तो ये नॉस्ट्रल्स को ओपन करेगा, और सेकंड जो है आपके जो अपर लिप है, ऊपर वाला जो होंठ है उसको हेल्प आउट करेगा मूवमेंट में। फिर उसके बाद हमारे पास चीक मसल आ जाते हैं। चीक मसल्स में हमारे पास जाइगोमेटिक सबसे पहले आएगा, जाइगोमेटिकस मेजर और जाइगोमेटिकस माइनर। तो बेसिकली दोनों मसल्स क्या करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प आउट करेंगे, और इसके अलावा जो माउथ का एंगल है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड माउथ को ड्रा करने में हेल्प आउट करते हैं। मैस्टर मसल्स बेसिकली जो मैंडिबल है उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प आउट करते हैं, और मैस्टिकेशन में हेल्प आउट करते हैं, चबाने में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद बक्सीलेटर मसल आ जाता है। बक्सीलेटर मसल जो है ये बेसिकली आपकी जो चीक्स है उनको टाइटली होल्ड करता है टीथ के साथ। उसके बाद राइजोरियस मसल आ जाते हैं। राइजोरियस मसल क्या करते हैं, वो स्माइल में हेल्प आउट करते हैं। और मेंटालिस जो मसल है जो बिल्कुल चिन के ऊपर होता है, मेंटालिस जो मसल है ये आपकी जो लोअर लिप की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। फिर आखिरी जो दो मसल आते हैं, जो डिप्रेसर एंग्लॉय ऑरस है, डिप्रेसर एंग्लॉय ऑरस जो है ये बेसिकली क्या करेगा, माउथ को लेटरली ड्रा करने में हेल्प आउट करेगा। लेटरल साइड कौन सी होती है, जो बाहर वाली होती है, जो बाहर की तरफ मुंह को ऐसे वो ड्रा करेंगे तो ये उसकी वजह से मूवमेंट आती है। फिर उसके बाद आखिरी जो मसल आता है वो डिप्रेसर हमारे पास लेबाई इंफीरियर एरस होता है, जो कि इंफीरियर पोजीशन पे होता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है, पुल योर लिप्स डाउनवर्ड और स्लाइड, यानी कि या तो ये लिप्स को डाउनवर्ड पुल करेगा और या स्लाइड करने में, लिप्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो ये इसकी मूवमेंट जो है ना, इसकी डिप्रेसर लेबाइस इंफीरियरस की पोजीशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बेसिकली फेस के मसल्स को, उसके फंक्शंस को और उनकी लोकेशंस को। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा डॉक्टर इमरान को। Until then, Allah Hafiz, Jazakallah.